we are live by we are live. So Rocco is back, and ODI cricket is back after quite some time, 7-8 months later. And Rohit will be back as a player after winning the Champions Trophy as a captain. First match India plays after the winning of Champions Trophy. We see a new structure, new look to the ODI 11. And to discuss on this, भाई मेरे साथ है अभिषेक and चिरोदीप. We'll be discussing on it. So अभिषेक से स्टार्ट करता हूँ. What's your take on this squad? क्या लगता है? The Should I batting share looks मैं स्क्वाड शेयर कर दूं? एक्चुअली मैं स्क्वाड शेयर कर देता हूँ. Okay, this is the squad for the Shubman Gill, Rohit Sharma, transfer of captaincy, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Akshar Patel, KL Rahul as the wicket keeping option. Jurel is the second wicket keeper. NKR, Washi, Kuldeep, Harshit Rana, the all format player, Siraj, Arshdeep, Prashit Krishna, Jaiswal and Jurel. Okay, Abhishek, क्या लगता है? The squad looks experienced और वो सब एक्चुअली इस वजह से हुआ है कि विराट और रोहित वापस आ गए. Just look at the batting side of Indian team. Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Shubman Gill, and I would say कि Nitish Kumar Reddy is quite new for this format or overall in India 11, but batting is totally too solid for Australian team. On the other hand, we are missing Bumrah and of course in bowling side, and for all-rounder Hardik is missing, and that would impact their bowling strength total bowling strength. Or we can trust in Mia Bhai, Siraj, Ashdeep, and of course we have to see Harshit Rana. For Harshit Rana, this series can be a make or break kind of thing. If he performs here in Australia, then it would be a big boost for his career. Otherwise, it would become difficult for him. We know how Australian pitches behave and how helpful it is for pacers, but he have to prove his coach right. Like मैं यहाँ पे बात गौतम गंभीर की करूंगा, but we'll talk it about later. We'll talk about गंभीर later भाई. बिल्कुल बात करेंगे. चिरोदीप, स्क्वाड का क्या लग रहा है? Squad has a nice balance in the batting department, but I feel that the bowling is not the way it should be. See, it makes no sense if you have a prime fast bowler in your squad and he plays a especially pointless West Indies home test series and then misses out on an ODI tour of Australia, which is by far a lot more important than what it should be in terms of the home series. But again, it's his personal choice. But in terms of bowling, we are not what we should be at this point. We know there's a lot of talent in, and obviously Mia Bhai is there for us to bank upon. And we all know that when Bumrah is not there, Mia Bhai does a lot of the heavy lifting for Team India. In terms of batting, we are sorted out, solid. But in terms of the bowling department, we still have a lot of unanswered questions, which I hope the young guys will be able to take care of. I would like to see Nitish Kumar Reddy bowl and not play as a complete batter. I was a little shocked about Nitish Kumar Reddy not bowling much when it came to West Indies series. He did not bowl much, and even Washington Sundar उसने भी मतलब ऐसा as such bowling में बहुत ज्यादा contribute नहीं किया. Would have loved that. एक comment है
राणा क्रॉस एंड जब मैं भी स्क्वाड देख रहा था ना, आई वाज थिंकिंग कि इज हर्षित राणा गोइंग टू प्ले? आई नो देयर इज अ गंभीर फेवरेटिज्म और व्हाटएवर वी से, he wants Harshit Rana to play and all, but is he playing here? We'll make our own playing 11 later on, especially for the first ODI. But do you think Harshit Rana plays? Especially because Prashid Krishna is someone जो इस सेटअप का पार्ट है. He's been playing for quite some time, in and out, in and out. He's been in the side. Siraj obviously plays. So do we see third pacer NKR as the third pacer pace bowling all-rounder, or do we see three genuine all-rounders here? Oh, sorry, three genuine pacers here. Abhishek? So are you assuming that Harshit Rana is not an all-rounder? He hasn't done much when it comes to batting. I was kidding. Yeah. But No, that's fine. That's fine. Like, uh, I also consider Suresh Raina as a proper batsman, not as an all-rounder. So yes, Harshit Rana. I'm considering Harshit as a bowler. अभिषेक क्या लग रहा है, खेलेगा हर्षित? देखो, अगर बात कर रहे हो कहीं और होता या ऑस्ट्रेलिया की जगह पे, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं और होता, तो देयर माइट बी लाइक कंफ्यूजन, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है, आई हैव सीन हिम परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक इवन जो बॉर्डर गवास्कर Yes. ट्रॉफी हुई थी, he bowled well. Okay, that's why the chances of playing in the top 11, it is high. Okay, the thing I'm confused about, Arshdeep Singh and Prashid Krishna, whom would you choose in playing 11? if there is one bowler in this setup that has a chance of performing well in Australia, and if there's one country that Harshit Rana has a chance of performing, that is Australia. He has his best performances in Australia, I believe. And in other countries, not so much. In India, definitely not. And Prasidh Krishna, in many ways, is more of a hit or miss. You never know when he's going to perform good. He does very well sometimes. We saw in the last England test. But in some cases, he leaks so many runs that it sometimes becomes difficult for the batsman to chase it. The other part, what I feel is Harshit Rana and Mohammad Siraj, they are both, similar kind of a pacer. If we look at, if you see Harshit Rana or Siraj and Prashid Krishna, they are very different kind of pacer. And I would like to see Arshdeep. He adds an left arm angle to the game. Left arm, I absolutely love left arm pacers when they swing the ball into the right hand. Everyone loves them, man. That's a sight to behold. So भाई मुझे अर्शदीप को देखना है व्हाइट बॉल फॉर भाई, फॉर समवन जो कंट्री का नंबर 1 और एज वी से लीडिंग विकेट टेकर इन T20s, वो वनडे में खेल ही नहीं रहा. दैट इज समथिंग ऑफ पजलिंग है बिट, क्योंकि भाई बॉल सेम रहता है. इवन दो 10 ओवर्स फॉर्मेट, 10 ओवर्स स्पेल इज अ लॉन्ग वन, थोड़ा डिफरेंस है, बट स्टिल वी कैन क्लब ODIs एंड T20s. तो This way, अर्शदीप, मैं चाहता हूँ अर्शदीप खेले. चिरदीप. This way, we have ruined another like beautiful left arm fast bowler that we had. I feel the fascination of Indians with left arm fast bowlers is because we do not get a lot, and all No. of our problems for all of our top order batters have been left arm pacers. Even the likes of legends like Rahul Dravid faced problem in facing left arm pacers, and generationally, left arm pacers have given us the most trouble, which is why we are fascinated by left arm pacers being in our squad. हमारे पास जयदेव उनतकट था, and we ruined his career by not giving him enough chances. I feel he had a lot more potential than what he delivered, and now we have Arshdeep Singh, and we are going in the same direction by not giving him enough chances. I feel. I was really hopeful of Natarajan when he came into the squad. I was really looking forward to Natarajan here. I think if we talk about Natarajan, Natarajan actually lost his chance due to He slipped off. I would say stardom. हाँ, stardom बोल सकता है. Then he became star after one India versus Australia tour, and then I didn't
saw him like I haven't seen him performing well after that. Notable performance, no. I can't actually remember a single notable performance after India versus Australia series. one series, that's it. Hmm. And उसके बाद he did not perform in IPL as well. Hmm. So by Injuries were a left arm lot of pacer, I mean, a big reason is yes, injuries yes, in middle, yes, yes, and बहुत then injury. वो सिर्फ My, कहीं खो गया वो. my left arm pacer ट्रबलिंग इंडिया से याद आया था मुझे, लाइक एक किस्सा था 2022 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच चल रहा था, एंड मैं अभिषेक के साथ पबजी खेल रहा था साथ में, एंड मैं मैच चलते चलते मैं पबजी खेल रहा था, एंड एक कोई तो लेफ्ट आर्म पेसर था नेदरलैंड्स का, ही बोल्ड फर्स्ट ओवर, उसको फिर हटा दिया, थर्ड ओवर उसको दिया नहीं है, एंड मैं आई जस्ट सेड कि भाई उसको एक ओवर दे देता ना, रोहित शर्मा इज लुकिंग सो टेंटेटिव, वो विकेट दे देता. He came back in the fourth over, picked up Rohit Sharma. Fourth या fifth over, he came back in the fourth, fifth over, he picked up Rohit Sharma. तो भाई इंडियंस को प्रॉब्लम्स होती है, एंड दैट प्रॉब्लम कंटिन्यूज विद शुभमन गिल एज वेल. उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है उसमें, इवन दो एक क्रॉस बैटेड खेलता है शॉट जिससे वो थोड़ा काउंटर करता है, बट दैट प्रॉब्लम स्टिल गोज ऑन. तो I remember लेफ्ट one. आर्म पेसर के I can't बोल actually बोल. remember the name, but there was a pace bowler, like a left-arm pace bowler of Pakistan, who took like 5 wicket haul in his debut match. क्या तो नाम था उसका? जुनैद, जुनैद इंडिया के खिलाफ ना. Junaid. हाँ, Junaid. जुनैद, जुनैद, So, हाँ. so he was and after that, Bangladesh, Mustafizur Rahman. Okay, he came. Like back to back, we were so struggling against left-arm medium pacers that everyone have a pretty much idea how to tackle with Indian batsmen. Left-arm pacer, good short ball, and it's done for Indian team. And after that, I saw that the batting style improved. They played well to like beat Mustafizur Rahman or Junaid Khan. But let's see what Here, एक कमेंट भी आया, एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस एज वेल. और लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात कर रहे हो, व्हाट्स योर टेक ऑन, एक शमी को लेके एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो गया कि अगर कर, और जो सिलेक्टर है वो बोल रहे हैं कि भाई हमें हमें नहीं पता है अगर वो फिटनेस के क्या सीन है, एंड शमी ने कहा कि भाई फिटनेस का क्या अपडेट है वो देना हम में उसकी, ही इज नॉट द वन रिस्पॉन्सिबल टू गिव the updates. The selector should ask and take the updates. Do you think there is an outside chance for Shami to go on and play 2027? Is there any chance at all? it's actually tough for him. Abhishek? And if you want to stay in race for like 2027 World Cup, you need to be fit for like a long period of time. We know Sami Hmm. is a talented bowler. He's doing well, and like he has done a lot for Indian team. But the thing is, after Champions Trophy and after this, we are playing so less amount of one day cricket that to choose players from that pool uh, is too much difficult. It's on the mercy of selectors only. If they think you are capable, then they will select you. But the point is, even for Rohit Sharma and Virat Kohli, it was difficult for them to. In my opinion, it was difficult for them because they were not performing for a big patch of like 8 months. We didn't monitor them. Okay, so if selector wanted them कि नहीं ये लोग perform नहीं कर रहा है, there are many new names like Subman Gill, Abhishek Sharma, Yashasvi Jaiswal. We are seeing them perform on a regular basis. Then it's on. We can directly say it's on mercy of the selectors. And talking about Sami, every pace bowler wants to play in Australia. Every medium pacer, every pace, like it will boost their career. It will help them. You all, every pace bowler wants to play in Australia, and that's what Shami said.
Even he wanted to play there, and selectors should have given them a chance because he was the one of the main bowler for Indian team to perform in one day cricket. Hmm. How can you like 2023 ignore वर्ल्ड them? कप Hmm. अगर अगर तुझे याद होगा अभिषेक, तो आई सेंट ही में मतलब हम ग्रुप में आई सेंट यू नो फोटो की चूज ए फाइव साइड टीम and Abhishek chose Bumrah, and I said that I will probably prefer Shami over Bumrah. And after T20, after sorry 2023 World Cup, after when the 2023 World Cup was going on, Abhishek messaged ki bhai, you were right. Actually, at that point, Shami looked way more effective. Bumrah को ineffective नहीं कहूँगा, but Shami yeah, brought in a very different thing. सीरीज में लेट आने के बाद, एक टूर्नामेंट में लेट आने के बाद आप हाईएस्ट विकेट टेकर बन रहे हो, एंड दैट टू आफ्टर देयर आर नेम्स लाइक स्टार्क एंड ऑल, स्टार्क, क्यूमिंस, तो वहां पे एक इम्प्रेशन जाता है, ठीक है. We know how lethal Sami is with his swing in death overs and all, but it is a different thing. The biggest problem with Shami is he doesn't have age on his side. There are The the biggest young problem guns. is that he doesn't have PR team on his side. Yeah, I PR was team getting on to it. that point. It बहुत दुख होता है देख के कि BCCI is exclusively not going for only talent and only stats and only performance to select the teams. It still, how Instagrammable you are is not supposed to be the criteria for team selection. Shami doesn't have good PR. He only focuses on his bowling, and that's a big problem. I agree, fitness is an issue. But this, like, there's a big chunk of PR that's going on against Shami, I feel, जो होना नहीं चाहिए. This should not be the case. Shami has a lot Actually, more I didn't cricket left in notice him. anything against Yeah. Sami. Maybe there are, but I didn't notice anything. Yeah. But उसका the thing Instagram is, presence उतना नहीं है जितना होना चाहिए, is the point. थिंग इज अगर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ रणजी ट्रॉफी फिक्सचर्स आज खत्म हुआ है. शमी पिक्ड अप 7 विकेट्स इन टू इनिंग्स, दोनों ही मिला के, एंड ही बोल्ड क्लोज टू 30 ओवर्स कंबाइंड. सो फिटनेस तो है. आई मीन ही इज प्लेइंग डोमेस्टिक, he has played he's playing रणजी ट्रॉफी, एंड एनसीएन से क्लियरेंस मिला है तभी शमी वापस क्रिकेट में आ ही रहा है. तो एनसीए से अगर क्लियरेंस मिल रहा है, दैट कैन बी एंड दैट शुड हैव बीन कन्वेड टू द सिलेक्टर्स एज वेल कि भाई ये प्लेयर इज अप फॉर सिलेक्शन, ही इज फिट फॉर सिलेक्शन. तो आप अगर एज अ सिलेक्टर बोल रहे हो कि भाई मेरे पास कोई आइडिया नहीं है उनके फिटनेस का या अपडेट नहीं है फिटनेस का, दैट्स ए वेरी लेम एक्सक्यूज आई वुड से. आप सीधा बोल दो कि भाई ही इज नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, ही इज नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान्स. आप सीधा बोल दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. उससे एक अलग चीज आ जाती है. बट अगर आप कहोगे कि भाई फिटनेस का आइडिया नहीं हो, दैट क्रिएट्स ए पुअर पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट कि भाई एनसीए और सिलेक्टर्स एंड बोर्ड के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. Bhai, so Shami is in good form now since couple of months. Bhai, I have rarely seen Shami out of form actually. Whenever he plays really well. Bhai. And especially, this ODI series in Australia takes me back to 2015 World Cup. Bhai. Takes me back to 2015 World Cup where he was phenomenal. Shami Yes. and Bumrah together, they were phenomenal. The thing is, he can use the ball in both the directions. Like, if you give him the new ball, he's good with it. If you want him to bowl with in death overs, he's too good with it. He become more dangerous when the ball is older. He can do like magic with that. And after the rules have changed, I think the ball remains old till a longer period of time. As much as I know, the new ball. अभी मौका मिलेगा कि प्लेयर्स को रिवर्सिंग करने का चांसेस ज्यादा मिलेगा. I think it's after 35 overs ना कि बॉल चेंज होगा.
30 ओवर्स तक सेम बॉल रहेगा, हाँ। मतलब 30 ओवर्स तक 2 अलग बॉल्स, एंड देन फ्रॉम 31 to 50 कोई एक बॉल यूज होगा. हाँ, तो लाइक अगर तुम्हें एक्स्ट्रा वो 6-7 ओवर भी एडिशनल मिल जाते हैं पुराने बॉल से, इट वुड बी लीथल. It would be lethal, भाई. Yeah, someone mentioned in the शमी का comments hat-trick कि है. शमी ने बीसीसीआई ने शमी को रीच आउट भी नहीं किया, which should not be the case. You have to have like good But this is something ना communication जो between your players. बहुत देखने को मिल रहा है. व्हेन विराट कोहली को भी ड्रॉप कर दिया गया था, उस टाइम पे भी ये आया था कि भाई विराट कोहली को कम्युनिकेट ही नहीं किया गया. शमी भाई, शमी एक ऐसा प्लेयर है हु इज अंडर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर से भी आप मतलब कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो कि वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, खेल सकता है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं, देयर इज प्रॉब्लम. And here we are wondering if Abhimanyu Ishwaran is not getting a place in Test side. So अगर शमी और I कोहली really जैसे feel लोगों को bad about communicate नहीं हो रहा है, Abhimanyu Ishwaran यार. Like at he least is in West the Indies home squad, but test में he तो दे can't देते play. उसको. Even in India A side, they didn't give him chance, Yeah, and that he has was been in and out of the squad for so long. At least West Indies home tests में तो किसी को ड्रॉप करके दे सकते थे. What is भाई the point of जैस- fielding a full strength Indian squad against a West Indies home test? भाई स्टैट पैडिंग, अब मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, दैट माइट बी कंट्रोवर्शियल थिंग, बट स्टैट पैडिंग सबने रन बना दिए, सबका एवरेज इंक्रीज हुआ है, बॉलिंग एवरेज बेटर हुआ है, सब कुछ हुआ है. every player has gained rating points and all. बट ये अगर मैं एक चीज फिर मैं हर्षित राणा पे जाता हूँ वापस. इफ हर्षित राणा इज इन योर प्लान्स, आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, why do you not give him chance for this West Indies tour? Why you did not give chance to someone like Mukesh Kumar? भाई तुमने डेब्यू तो करा दिया उनको, बट व्हाट आर देयर फ्यूचर्स? Yeah, agreed. तो You should have fielded a second 11 in for against West Indies. At least the matches would be a little more interesting. This was Test cricket at the most boring I've ever seen. This shouldn't be. I did not like at all watching the games. It was so. Instead, I watched the Women's ODI World Cup. I will take there is a comment about selection committee. I will take that comment. I will come to that selection Agarkar and selection committee later on as well. There is something. So we're talking of exclusion of Sami. What do you feel about exclusion of Jadeja? Like, he hasn't retired from ODIs, and he's been in good form as well. He got the man of the series in this Test series. Although दोनों अलग formats है, सब कुछ अलग है, but Jadeja is a pretty handy performer when it comes to ODI cricket. Chirodeep? Yeah, he has improved his batting also in the past years. Right. Around 2015, 2016, he used to be purely a spinner in the squad. But now he has improved his batting a lot. We've seen quite a few Test centuries also from his bat, and he has saved India in crucial matches. So those skills are not going away if you are moving from Tests to ODIs. He should have been considered, especially if this is a potential selection for the World Cup, since Ashwin is no more in the ranks. So Jadeja could be a very viable option when it comes to that one spinning option that you need in Australian tracks. But the point is कि BCCI is going for Akshar Patel rather than Jadeja. Yeah, which makes sense. I think someone in the comments also said that given his age, that other all-rounders should be given a chance. I agree. Someone like Akshar Patel and even other all-rounders which are not in the mix yet, but that could be done after 2027 World Cup, I guess, because I'm sure Jadeja has enough fitness to continue till 2027 ODI World Cup. That's not a problem. But then, if we are talking of age when it comes to Jadeja, okay, if we are talking of age when it comes to Jadeja, do we talk of age when it comes to Rohit, Kohli, and at the same time Mohammad Shami? Why age becomes factor for selection for some players and not for Definitely, some others? कुछ तो The wrong thing- है. We cannot have
age factor for Shami because he is not the fittest of players in the team. And we are seeing that the most fittest players in the team are getting retired prematurely when they definitely should not have retired. Abhishek? The thing is like the replacement becomes a very difficult, I would say, obstacle for the selectors too. Like for Rohit Sharma and Virat Kohli, the experience which they carry, it's not possible for them because in T20s you can try on new blood, but in ODIs and Test you need experience, and it is difficult to fill the gap or the fill the shoes of Rohit Sharma and Virat Kohli. If one bad move and the whole tournament or But the whole side is disturbed. प्रॉब्लम फिर वही है ना कि हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे तूने भी कहा कि लाइक वी अदर प्लेयर्स आर नॉट एक्सपीरियंस्ड एनफ टू रिप्लेस, और वी डू नॉट हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स हु कैन रिप्लेस रोहित एंड विराट कोहली. बट अगर हम मौका नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा प्लेयर्स को. प्लेयर्स वोंट गेट दैट मौका एक्सपीरियंस. मौका मिल रहा है एक्चुअली T20 फॉर्मेट में या ओडीआई ये टेस्ट फॉर्मेट में. बट अगर तुमने मतलब फिर 2027 का प्लान कर रखा है फॉर दैट, उसके बीच में मैं नहीं चाहूंगा कि कोई रोहित शर्मा और विराट कोहली की पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करे. क्योंकि मान लो कि अभी तुम इंडिया में खेल रहे हो, लाइक कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, तुम इंडिया में खेल रहे हो, वहां पे तुमने परफॉर्म कर दिया, ओके, इट्स अ गुड थिंग. बट देन द सिचुएशन चेंजेस लाइक 2019 में जैसे हुआ था. यू हैड इश्यूज विद नंबर 4 प्लेयर. ठीक है, अंबाती रायडू ले जाएंगे, विजय शंकर ले जाएंगे, क्या करना है, शिवम दुबे, कुछ नहीं पता था उस समय. एंड वी डिड स्ट्रगल. केएल राहुल भी उस समय नंबर 4 के पोजीशन के लिए थे, श्रेयस अय्यर भी था. बट द पॉइंट इज कि जो मिडल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली. एंड दिस इज द ट्रूथ विच वी डोंट टॉक अबाउट, क्योंकि हम बात करते हैं ओपनर्स के फेलियर्स की, टॉप ऑर्डर के फेलियर्स की, बाद में धोनी के रनआउट की, जडेजा डिड ट्राई. बट जो एक स्टेबल पार्टनरशिप होनी चाहिए थी जो बीच में टॉप ऑर्डर के जाने के बाद, वो हमने वहां पे मिस किया, और वो हम हर मैच में मिस कर रहे थे. ऐसा नहीं है तो. एंड द थिंग इज टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट, तुम जडेजा को रिप्लेस, लाइक अक्षर पटेल इज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर जडेजा. ही बैट्स, ही बॉल्स, बट अगर तुम बात करो हेड टू हेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जडेजा इज बेटर देन अक्षर पटेल. बट आफ्टर 2 years आई कैंट से. बीसीसीआई अभी तक यही श्योर नहीं हो पा रहा है कि whether they are looking at Rohit and Kohli from a 2027 वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव. They are still not sure कि उनको in the mix रखना है कि नहीं. They are not. अगर हम 8 महीने बाद एक ओडीआई खेलेंगे, देन इट्स क्वेश्चनेबल टू बीसीसीआई कि तुम किस हिसाब से फिक्चर सेट कर रहे हो. अगर तुम्हारे प्लेयर जो है, जो रोहित, मतलब मैं कोई छोटे प्लेयर की बात नहीं कर रहा है, छोटा प्लेयर तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब कोई ऐसा प्लेयर की बात नहीं कर रहा जो यंग हो, तुम उसे ट्राई कर रहे हो अभी. दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, लाइक प्लेयर जिनके पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे नाम वाले हैं कि उन्होंने अपने दम पे टूर्नामेंट्स खींचे हैं, टूर्नामेंट जिताए हैं, अपने दम पे पूरी टीम को आगे लेके गए. एक वन मैन शो, कितने ही ऐसे मैचेस हैं जिसमें वन मैन शो हम बोल सकते हैं, ओके. और तुम उनको मैच खेलने का चांस दे रहे हो 8 महीने बाद. इट्स क्वेश्चनेबल कि तुम T20 खेल रहे हो, टेस्ट खेल रहे हो, बट उस फिक्चर में कहीं भी ओडीआई नहीं था. बट यहाँ पे एक चीज है ऑन देयर पार्ट, ऑन रोहित एंड विराट कोहली पार्ट, they are not playing domestic cricket as well. जब इतना गैप होता है, मतलब अगर तुम खेल रहे हो तो डोमेस्टिक खेल रहे हो तो यू आर एमिड्स क्रिकेट, आप खेल रहे हो तो एक फॉर्म रहता है, यू कंटिन्यू दैट. आई थिंक
जब इतना गैप मिलेगा, क्योंकि टी20 बहुत ज्यादा हो रहे हैं एंड टेस्ट मैचेस अभी फिर साउथ अफ्रीका भी आएगा तो एक लंबा टेस्ट, तो गैप मिलेगा उसके उस टाइम पे ना मेरे हिसाब से शायद से शाहिद मुस्तक अली ट्रॉफी चलेगा. सो इफ आई हैव टू से ना दे शुड प्ले शाहिद मुस्तक अली. स्मैट उनको खेलना चाहिए. बट देन हम्म, अगर जब वो रोहित कोहली की सिलेक्शन की बात हो ही रही है तो एक स्टेटमेंट आया था कि भाई वी विल सी हाउ व्हाट देयर फॉर्म इज during that 2027 वर्ल्ड कप, और वी डू नॉट डिसाइड ऑन देयर फॉर्म. तो भाई फॉर्म तो किसी का भी डिसाइडेड नहीं हो सकता ना. फॉर्म तो किसी का भी डिसाइडेड नहीं हो सकता. हाउ कैन यू डिसाइड कि भाई शुभमन गिल विल बी इन पीक ऑफ हिज फॉर्म व्हेन इट कम्स टू 2027 वर्ल्ड कप. ही माइट हैव हिज टचवुड ऐसा ना हो, because he's a very very able, very important player for us, of course. But agar if he gets into the lowest of his forms of career, at the lowest of his career during that world cup, तो क्या आप उसको कैप्टेंसी से हटा दोगे? नहीं. But the form should be a criteria for everyone. Why the form comes in, form and fitness comes in just because when we are talking about Rohit Sharma and Virat Kohli. This should be the criteria for every player, isn't it? Kiradip? Yeah, I agree. That's why I said कि selectivity तो हो रहा है. We only look at a specific trait of certain players, not everything. कोई यूनिवर्सल मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा जिसपे बीसीसीआई अपना प्लेयर्स चूज कर रही होगी in terms of all these series. एक तो ODI as a format is very overlooked. I don't know why. It's a beautiful format of cricket. ODIs खेलते ही नहीं कोई अभी. सब टेस्ट और टी20 में लगे हुए हैं. टेस्ट भी अगेन 4 ही नेशन खेलते हैं अभी तो. बट स्टिल ऐसा होना नहीं चाहिए. I seriously think BCCI should relook at its selection criteria and selection structure and everything. You cannot have different rules for different players. I'll address this one. जो कहा कि recently I heard that Ravi, I guess is Ravi Shastri. Ravi Shastri will coming in place of Agarkar. Maybe it will bring in some changes. क्या लगता है, मतलब how much is Agarkar responsible for some sort of disagreement या mess या जो भी कहना चाहे हम लोग इस मोमेंट पे regarding selection, especially with Rohit and Kohli? Abhishek? I don't know. Yeah. Actually, you know what? I'm not saying ki only Agarkar, but it has become a tussle between BCCI and Indian cricket team since like Virat Kohli changed the captaincy when they snatched the captaincy from Virat's hand. It is Yeah. way back, like they are fighting over the dominance. Who is managing the like team? I was happy that when I used to think Virat and Sastri were managing the team. Like at that point of time, कि हमारे पास 11 प्लेयर हैं, हमारे पास 15 प्लेयर हैं और हम मैनेज कर रहे हैं. कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन टीम में आएगा, कौन टीम में नहीं आएगा, प्लेयर्स का एटीट्यूड क्या होगा. एंड वो एक बॉन्डिंग दिखती थी टीम के बीच में भी. Be it that attitude, that confidence, वो दिखता था. इवन कोच आके like, but after that, जब से रवि शास्त्री ने कोचिंग छोड़ी है, after that there is a tussle like between BCCI and the Indian cricket team management. I don't know what's happening, but hope Do you it. guys feel that? Sorry, I have a follow-up question for this. Do you think India should be having three? I mean, different captains in different formats? Maybe all three different captains, or at least two different captains in tests and ODIs and T20s, tests and limited overs. Bhai, if you ask me na, if you ask me that अगर results मिल रहे हैं हमें, if we are getting results in all three formats, I have no issue with three different captains, or if you keep in, you know, And in for different formats. I think this like होता है ना कि कैप्टेंसी का जो शिफ्ट होता है,
It should be smooth. It's not like कि अचानक से एक दिन आया कि आज से रोहित शर्मा नहीं शुभमन गिल कैप्टन है. हाँ, मैं इसको लेकर ना लाइक आई हैव थॉट अबाउट इट थोड़ा सा कि लाइक इवन एज अ धोनी फैन, बट आई थिंक जो मेरे जैसा मतलब प्योर धोनी फैंस भी नहीं है वो लोग भी एग्री करेंगे, बट क्योंकि धोनी ने आईसीसी ट्रॉफी जीता है, रन बनाए, बहुत बढ़िया स्टंपिंग्स किया है, लास्ट बॉल फिनिशेस, एंडिंग, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ है, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड थिंग और वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट धोनी, धोनीज एरा जो हम लोग कहते हैं कैप्टेंसी एरा, वाज नो एक स्मूथनेस था, ड्रेसिंग रूम लीक्स नहीं होते थे, द स्मूथ ट्रांजिशन, जिस तरह से हमने धोनी टू कोहली ट्रांजिशन देखा, कैप्टेंसी फेजिंग आउट ऑफ कैप्टेंसी, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ धोनी, जो हम लोग मतलब मोस्टली ओवरलुक कर लेते कि ही प्रोवाइडेड अ स्टेबिलिटी भाई, ड्रेसिंग रूम्स लीक्स नहीं होते थे, फिर बीसीसीआई सिलेक्टर्स और सिलेक्टर्स, कैप्टन, कोच सब एक पेज में लगते थे, ट्रॉल्स करने के लिए होता है कि भाई he sacked selectors, I don't know how much उसमें कितनी सच्चाई है, but I think the stability he provided on and off the field, that is something जो like at this point we are missing. क्या लगता है अभिषेक? इसका एक सॉरी अभिषेक, इसका एक काउंटर आर्गुमेंट है मेरे पास कि तब इंस्टाग्राम नहीं था, तब जियो नहीं था, सबके पास इंटरनेट नहीं होता था बात करने के लिए, तब प्यार नहीं था, PR इतना स्ट्रांग नहीं था. तब एग्जैक्टली. प्यार नहीं था, तब क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लिया जाता था, और अब जब बात अभी करते हैं हम, तब उस टाइम के सिलेक्शन को हुक्का के साथ कोई छोड़ देता है. बस हुक्का वाला पे तो मेरा एक ही कहना था भाई, अगर हुक्के से 3 आईसीसी ट्रॉफीज आते हैं तो भाई हुक्का पे सिलेक्शन कर लो पियो वापस भाई. से। सबको हुक्का पिलाना चाहिए। स्टेज पे चढ़ के हुक्का पियो भाई, छलने वाला हो तुम. कमेंट्स पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि प्लेयर्स शुड अर्न द कैप्टेंसी। कोहली एक ऐसा कैप्टन बना जो पहले कोहली बना, वो उसने दिखाया कि व्हाट ही कैन डू एंड देन ही गॉट द कैप्टेंसी। इवन रोहित शर्मा वाज गुड यार. Rohit Sharma was good at that point of time. Rohit But Sharma, I didn't like the way Rohit Sharma became the captain. Okay? Exactly. जिस तरीके से, because देखो मैं इस बात से नहीं नाराज हूँ कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा के शुभमन गिल को बना दिया या विराट कोहली को हटा के रोहित शर्मा से बना. एटलीस्ट डिस्कस, लेट देम नो कि चल क्या रहा है. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक कमेटी बनी जिसके अंदर तुम ये प्रपोज करोगे कि रोहित शर्मा भाई तू अभी अपने बैटिंग पे फोकस कर, वी आर लुकिंग एट far from 2027 and far from ये we want कि ये भी थोड़ा स्टेबल हो जाए, तो लोग गाइडेंस पे इसको कैप्टन बना देते हैं एंड वी वांट यू टू सपोर्ट. मुझे नहीं लगता वो मना करेगा भाई, चिल बंदा है वो, ठीक है भाई कर ले. बट तुम अचानक से ऐसे डिसाइड कर लेते हो. जब विराट से पूछा गया कैप्टेंसी के बारे में तो उसने भी बोला भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं था. बीसीसीआई अलग स्टोरी बता रही है एंड विराट अलग स्टोरी बता रहा है. इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. एग्जैक्टली. यस, तुम बात तो करो कैप्टन का कुछ थॉट होगा. शिरोदीप ने एक बात कहा था कि भाई कि कोहली गॉट कैप्टेंसी आफ्टर ही बिकेम कोहली, तो उसपे ना मैंने एक एनेक्डोट सुना था, सही है गलत है मुझे नहीं पता भाई, एनेक्डोट सुना था कि भाई एक बार एक ऑप्शनल ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था इंडियन टीम का, एंड विराट कोहली ने डिसाइड किया, ये 2023-24 के अराउंड की बात है, तो टीम इंडियन वो ऑप्शनल ट्रेनिंग था एंड विराट कोहली ने डिसाइड किया कि he will not participate in that. And even Shubman Gill decided कि भाई he will not go for that. तो विराट कोहली walked up to Shubman Gill and कहता है भाई मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, तुझे यहाँ पे पहुंचना है, जा प्रैक्टिस कर. That shows the mindset of भाई विराट कोहली तब भी शायद से 2020-21 तक तो उतने ही फोकस में सब कुछ कर रहा था भाई. हम लोग ट्रेनिंग की फोटोज वीडियोस भी देखते थे भाई, विराट कोहली इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल. तो remember there was a saying just before I heard it, maybe it is the rumor or a fact, before India versus Pakistan, that 8 balls 28 runs वाला मैच, ठीक है, विराट कोहली came
earlier for the practice, went last for the after the practice, and people saw that. People noticed it and they mentioned कि आधा घंटा 1 घंटा पहले आया था और आधा घंटा बाद में गया है। और उसके बाद इंडियन टीम आई, उसके बाद पाकिस्तान टीम पीछे पीछे लटकते हुए आई। आई थिंक कोई पाकिस्तानी फैन ही था जिसने ये बोला, बोलते तुम ऐसे कैसे उम्मीद रख रहे हो फिर। हाँ चेंज है ना भाई, विराट कोहली का जो एटीट्यूड है इट हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट जब उसने रूल किया उस समय जो एटीट्यूड था उसे कोई प्लेयर फॉलो करे। नॉट ओनली प्लेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। ओके, कि अगर कोई अपनी लाइफ में उस रूल को फॉलो करे देन इट्स अ बिग थिंग फॉर इट, इट कैन मेक यू biggest in your field. Like he was so dedicated, but now his life has become ना कि वो बहुत काम हो गया, he has achieved everything. Like ये चीज जो है ना, एक जो हंगर था। He has completed cricket. He has completed cricket. रोहित शर्मा का बस वो ओडीआई वर्ल्ड कप रह गया। अदरवाइज भाई दोनों बोथ ऑफ देम हैव कंप्लीटेड क्रिकेट भाई। दे वन एवरीथिंग दे कैन। विराट को वो आईपीएल ट्रॉफी भी मिल गया जो एक रह गया था। वो सैटिस्फैक्शन लेवल। रोहित का तो भाई क्या बता, रोहित बिकेम द कैप्टन, ऑफ कोर्स वो ट्रांजिशन का जो सीन हुआ था वो अच्छा नहीं था। आई डिड नॉट लाइक दैट एज वेल, बट रोहित बिकेम द कैप्टन आफ्टर विनिंग 5 आईपीएल ट्रॉफीज भाई। After winning 5 IPL trophies. Actually, तो भाई people were suggesting कि रोहित को बना दो। This was the only, I would say, argument, logical argument कि रोहित is better captain than विराट, क्योंकि उसने 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताए हैं। थोड़ा फ्लॉट तो है ये। खैर अभी तो थोड़ा 2 आईसीसी ट्रॉफी आ गए। अब तो विराट के पास भी है। ट्रू। तुम लोगों को तो लगता है विराट के पास ऐसा कैप्टन नहीं है ना? एज अ कैप्टन नहीं है ना। नहीं, ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, वो बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा इज, I would say, a little better than Virat Kohli. Wait, 2019 World Cup, T20 World Cup, Champions Trophy. He has done maybe जब हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करें we can agree upon that भाई विराट कोहली is probably विराट कोहली is too good भाई। रेड बॉल में जो वो अपनी पर्सनालिटी लेके आता है, जो टीम लेके आता है, इट इज टू डिफरेंट। और वो चीज आई थिंक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टूर्नामेंट में दिखी। वो जो एक बहुत मार्जिन से डिफरेंस था। अगर मैं बोलूं कि विराट कोहली कैप्टन होता या विराट कोहली सिर्फ टीम में भी होता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस विराट कोहली जो काफी काम और हो गया, वो एग्रेसिव 2017-2018 विराट कोहली, तो we could have won that like series easily, क्योंकि कई जगह क्लोज मैच फंसे, जो एग्रेशन चाहिए था। हमने पहले भी इस पे बात किया था कि भाई दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट इंग्लैंड साइड वी आर फेसिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। फाइन, द थिंग इज कि पीपल वर सेइंग कि I was laughing on that point कि when Shubman Gill was acting like aggressive, people were stop acting like Virat. भाई विराट की एक्टिंग को अभी तक फाड़ कर रखे थे पूरी टीम को। हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम? तो 2 मिनट के तुम्हारे नाटक सह रहा है, would have killed them. अभिषेक ने शुभमन गिल की बात बोल ही दिया है, तो probably he is being looked at as the all format captain. He is actually now the all format captain. वाइस कैप्टन है T20s में, तो वाइस कैप्टन है तो बन ही जाएगा भाई। सूर्या इज ऑलरेडी शायद से 35-36 के अराउंड होगा, तो and he is not even performing like सूर्या अगर कैप्टनसी से हटता है तो टीम के बाहर भी चला जाएगा, कोई नई बात मुझे मतलब it won't shock me. Even though I would like if IR comes in place of Surya, IR should be the captain, but खैर वो तो होगा नहीं। But then मैं ये कह रहा था भाई, इस चीज को लेके गौतम गंभीर का एक स्टेटमेंट, मतलब he has always said this and has always maintained this कि भाई हमें स्टार कल्चर को अवॉइड करना चाहिए। But is it not contradicting that we are making Shubman Gill the star at this point?
he is the all format star and everything. You are giving the limelight जो आप किसी और को देना नहीं चाहते हो, but you are in some way redirecting that spotlight to Shubman Gill. And of course Harshit Rana because of some other reasons, but okay. Chirodeep, being a I don't KKR fan, Chirodeep, Shubman Gill, who has been a part of KKR, Gautam Gambhir, the legendary man of KKR, and your Harshit Rana. What's your take on it? I have no idea why Harshit Rana is being given so many chances. कुछ तो होगा. तो people videos की बात करते he हैं. I has don't know. potential actually. Harshit He has Rana a lot has of potential. potential. But He देखो, proved actually in earlier stages, like जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हुए थे, he did well. But after that, I don't know. सब ठीक है. पर अगर हर्षित राणा को इतने ही चांसेस देने हैं तो वेस्ट इंडीज टेस्ट में तो फिर क्यों नहीं दिए? ये चीज काफी शॉकिंग है कि तुम्हें इंडियन सॉइल पे खिलाना चाहिए था. If a बीसीसीआई pace खुद ही को bowler कॉन्ट्राडिक्ट कर performs रहा है. well in India, means he can do a lot in different यस, countries. फुल्ली अग्रीड. तो अगर चांसेस देने ही है तो ऐसी जगह पे दो जहां ही कैन बोल एंड इम्प्रूव हिज चांसेस. एक नॉट द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड, एक एवरेज टीम है, उसके अगेंस्ट तुम बॉल डाल रहे हो, तुमको कॉन्फिडेंस भी बेटर होगा. व्हाट इज दिस प्लेइंग बुमराह इन वेस्ट इंडीज टेस्ट एंड देन ड्रॉपिंग I don't बुमराह know फॉर why Bumrah played against West Indies. He मेक्स could नो have सेंस. focused for इंजरी हो जाती. Australian. My thing is, I will say कि भाई, when Mohammad Siraj was brought in by Virat Kohli, I would say, जब मोहम्मद सिराज को लाया था, both Siraj and Virat Kohli was told. But when you get chances, when you get repetitive chances at the highest order, na, you will improve no matter what. So भाई अभी जितना ट्रोल हो रहा है, मतलब ट्रोलिंग असाइड भाई, ट्रोल्स वोल्स तो वो तो चलता ही रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट, बैटर्स एंड ट्रोल्स. बट व्हेन इट कम्स टू दैट गिविंग अपॉर्चुनिटीज, अगर हर्षित राणा को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिला एंड इफ he is well disciplined and well disciplined, so bhai, I think he can excel. Yeah, he bowls good length. That's a good thing actually. But ठीक है भाई. So last thing on Gautam Gambhir, he said कि भाई हर्षित राणा को ट्रोल करना गलत है and everything. Agreed. भाई हर्षित राणा को ट्रोल करना गलत है, but I think if we are questioning his selection in all formats, I think that questioning should be allowed. तुम blanket protection नहीं दे सकते किसी भी player की सिलेक्शन पे. जब Questioning should be done on any player. जब रोहित और कोहली के सिलेक्शन पे क्वेश्चनिंग हो रही है, 2019 पे धोनी पे क्वेश्चन हो रहे थे, सचिन तेंदुलकर पे क्वेश्चन हो रहे थे इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ हिज करियर. तो भाई you have to, you can't put a blanket ban on questioning, and no one is questioning his or maybe some are, but majority people are not questioning his potential or something, or trolling him. Rather it is questioning ki bhai, what are his numbers when it comes to domestic for which he is being selected. ठीक है भाई, तो कल से स्टार्ट हो रहा है टेक्निकली. हाँ, फॉर अस, फॉर चिरोदीप, इट इज ऑलरेडी द डे फॉर द मैच. No, it's the playing opposite. 11. For you guys, it's the D-Day. For me, it's the end. We are earlier than him. अच्छा, yes, sorry, we are मेरे half लिए an hour away संडे from the game. मॉर्निंग को मैच है. We are half an hour away from it. So Yeah. अच्छा, so here what we'll do is, three of us individually will make our playing 11. Yes. Okay. So here I will share this. Okay. दिख रहा है ना? Player left hand side में दिख रहा है? Okay. So let's start with Chirodip bhai. Chirodip, number 1 player. Should I put in a number 1, 2? इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो चल जाएगा ना? Let's go with Abhishek नहीं, first. ऊपर से मैं थोड़ा सोचूंगा और. दोनों हाँ? को सेलेक्ट कर, एक्सेल चला है ना. अरे
उसको ड्रैग करके, हाँ नहीं फिर 2 हो जाएगा सिर्फ। अब सिलेक्ट तो हो गया भाई, इससे अच्छा अच्छा टाइप तो ही कर मैं ले। टाइप ही कर लो। 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके, लेट्स स्टार्ट विद अभिषेक। ठीक है भाई, अभिषेक से स्टार्ट करते हैं, चलो। I would say Gill, Rohit, हाँ मतलब खैर Rohit, उसमें तो क्वेश्चन है ही Kohli, नहीं। हम्म, Iyer, KL Rahul, केएल राहुल एट 5, ठीक है। Reddy, विकेट कीपर हो गया रेड्डी। हाँ, हम्म, Akshar 6। Patel, हम्म, Kuldeep, हम्म, Harshit Rana, Siraj and Arshdeep. हर्षित, Siraj and Arshdeep. सिराज एंड अर्शदीप। ओके ओके, हम्म, एक क्वेश्चन है, डू वी हैव इनफ लेफ्ट हैंडर्स? अक्सर को वी छोड़ के हैव अक्सर। ओनली अक्सर इज देयर इन लेफ्ट हैंडर्स। Same as with us, same with us in 2023 as well. Chiradip? Yeah, just again, it will be a very unpopular opinion, but I will keep Iyer alternated with Gil Rohit Kohli, that's for sure. IR alternate with? no. Now that I think about it, Jaiswal उस पोजीशन पे आ नहीं पाएगा, तो No, Jaiswal cannot comment net. just because of the left-handed possibility. But कोई है नहीं, अब क्या करे, पंत खेलता नहीं है ओडीआई ठीक से, तो खेलना चाहिए था। Pant is injured, if I'm not mistaken. He's injured. अच्छा हाँ, अभी तो इंजर्ड है, सॉरी हम्म, भूल गया था। बट अगेन फिर तो पूरा एग्जैक्ट सेम 11 हो जाता है मेरा भी, same. Nothing is because worse. IR, बाकी 6 प्लेयर्स देख ले, जुरेल विल नॉट गेट अ प्लेस इन द फर्स्ट 11, वाशिंगटन विल नॉट गेट अ प्लेस इन द फर्स्ट 11, तो रह ही जाता है कौन फिर? Harshit, Rashid Siraj Krishna, you and can try, Harshit. but मुश्किल है. हाँ, दैट्स द ओनली थिंग कि प्रसिद्ध कृष्णा अगेंस्ट हर्षित एंड दैट्स इट, बट But अगेन I हर्षित think, कैन I think थोड़ा जायसवाल that, ही को चांस तब मिलेगा जब ओपनर्स में से कोई गड़बड़ होगा. The thing is, but I would have liked Jaiswal की जगह कोई एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता ना इस मोमेंट पे. I would have Yeah. you can actually try. liked it to be. अगर तुम्हें भाई प्योर KL बैट्समैन राहुल की है ना तरह हमारे नीतीश पास. कुमार रेड्डी को खिलाना है, then you can try जायसवाल. तो फिर तो बॉलिंग वेरिएशन भाई कम हो जाता बॉलिंग है। ऑप्शंस 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस है, एंड वी आर गोइंग विद 2 स्पिनर्स एंड Yeah, भाई you know what? I Change think Harshit with this to the Prasidh. oh that might be only option, only Yeah. change possible. I think Squad with ये the बनाया ना problem कि with you this cannot is change anyone. the अपना problem with 17 this मेंबर is का, yeah, go ahead, sorry. ना The thing is that what I feel. कि हम ये भी कर सकते हैं कि कुल अगर हमें 2 स्पिनर से अगर नहीं होता है तो वी कैन ट्राई प्रसिद्ध इन केस इन प्लेस ऑफ कुलदीप. Kuldeep in I ODIs think is goated, so वैसे I नहीं. think In Kuldeep is Australia it would be difficult for him to perform. चलेगा भाई. ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर सपोर्ट करता है भाई. कितना ही करता है. ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर सपोर्ट करता है. बंदा शेन करके बहुत विकेट लिया वो ऑस्ट्रेलिया. कौन कौन? रेस्ट इन पीस. हाँ हाँ, दी लेजेंड भाई. अगर रिसेंट बॉलर्स की भी बात कर लेना, नाथन लियोन इज फेनोमिनल भाई. हाँ, इवन एडम एडम जम्पा भी, जम्पा एडम इज जम्पा डूइंग भी, रियली हाँ. वेल. Bro, द प्रॉब्लम इज both of them like जब अगर बात करो एडम जम्पा की और नेथन लैन की, तो इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट देवर फेनोमेनल, ठीक है. बट जब ऑस्ट्रेलिया की बात आई, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने की, तो स्टिल दैट इज ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटेड तो बाय पेसर्स. ओके, एक ही स्पिनर लेके जाता था ना वो, तो शेन वॉर्न ऑटोमेटिक पिक हो जाता था उनका.
After Shane Warne left, we saw Jason Krejza or Xavier Doherty or Nathan Lyon and other things. But हाँ नेदरलैंड I think शेनोन के टाइम पे कहा है, शेनोन तो अलग ही टाइम है, टाइमलाइन ही अलग वही है। बोल रहा I, हूँ I, कि after Shane जेवियर Warne left, डोर्टी we तो got इतना था। क्योंकि I think most ऑस्ट्रेलियन of 11 में some इन ऑस्ट्रेलिया दे हैव ओनली वन प्लेस फॉर ए स्पिनर हम्म, और कोई नहीं, तो अग्री। वो नेथन लायन ऑटोमेटिकली हो जाता Adam Zampa created havoc in 2023 World Cup. He got the pitches and and he hurt us as well. है। Not to वो mention चेंज हो in the जाता है final. भाई। इट्स लाइक कि जैसे इंडियन मक्कर पेसर्स लाला चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया मक्कर। में खेलना, वैसे ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स भी चाहते हैं इंडिया में खेलना। हाँ खिला लो भाई, खिला लो प्लीज, खिला लो, हाथ पैर जोड़ के भाई। हाँ भाई, बट जसन क्रेजा आके तबाह करके चला गया भाई। भाई जसन जसन ग्रेट क्रेजा पॉइंट इन आके द तबाह कमेंट्स करके। कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत लेफ्टीज ऑस्ट्रेलिया है, तो लेफ्टीज कुलदीप को खेलना चाहिए। लेफ्टीज है। हाँ एग्रीड। अश्विन होता तो मैं अश्विन को भी डाल दूं सर। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट Hmm. हाउ दैट I डिपेंड्स think I है कि think हाउ इफेक्टिव एक्चुअली द स्पिनर्स आर देयर। भाई ऑस्ट्रेलिया में ग्रिप तो करेगा भाई ऑस्ट्रेलिया में, होपफुली ग्रिप करेगा क्योंकि अक्षर भी तो है ना भाई, एक और ट्राई तुम हाँ दो। ऐसा नहीं है कि लेफ्टीज है तो तुम दोनों स्पिनर, दोनों तरफ से प्रॉब्लम स्पिनर लगा दोगे। भाई प्रॉब्लम ये है ना कि अक्षर इज नॉट द विकेट टेकिंग ऑप्शन। आई मीन लाइक अक्षर इज अ ग्रेट बॉलर बट ही इजंट दैट विकेट टेकिंग ऑप्शन इन द मिडल। हम जितना भी बढ़िया बात कर ले, इतना प्रोलिफिक विकेट टेकर नहीं है जितना मतलब कुलदीप होगा या चाहल होगा या अश्विन होगा, क्योंकि वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी वाला बॉलर है। तो आई थिंक उस वजह से फिर तो यार मतलब कुछ चेंज ही नहीं कर सकता ना, फिर तो प्लेइंग 11 फिक्स्ड है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों में से मतलब तुम अर्शदीप, हर्षित और तुम प्रसिद्ध कृष्णा बेसिकली अपना तीन में से फिक्स लेके जा रहे हो और वहां पे बैकअप के लिए रखा है इन केस कोई इंजरी होती है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एक अपना टॉप 6 में कोई हिलने का कोई रूम ही नहीं है। किसको बिठाओगे अनलेस समवन इज इंजर्ड? कोई नहीं है। दैट्स इट। खाली बट पेसर्स में एक आध प्रॉब्लम चेंजेस हो सकता है बस। जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है ना, मुझे प्रॉब्लम लग रहा है एनकेआर एट नंबर 6। एनकेआर एट 6 मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज लग रहा है। एनकेआर एट 7 इज अ वेरी गुड ऑप्शन, but when it comes to NKR at 6, if NKR might be at 7 because Akshar is a better batsman, I guess. Akshar can be at 6. either way, what I'm saying is either way, Akshar at 7 and NKR at 6, or Akshar at 6 and NKR at 7, uh, I would have technically means I would have liked them at 7 यू and वांट अ 8. बैटर, That यू वांट अ बैटर इन टॉप 6। I want a better proper top 6 batsman. फिर But the हाँ problem फिर यहाँ तो पे ये हो जायसवाल को ही जाता आना है, पड़ेगा और कोई नहीं है। नो वन। जुरेल कैन कम इन क्योंकि टॉप ऑर्डर में जगह बन ही नहीं रहा। नहीं या यार, जुएल। एक्चुअली टिल 7 वी हैव बैटर्स, तो नहीं, आई डोंट थिंक भाई वी नीड टू चेंज भाई दैट। भाई गौतम गंभीर बहुत सेफ खेलता है भाई। वी सॉ इट इन इंग्लैंड भाई, एक्स्ट्रा बैटर खिलाया है। उस हिसाब से वी देखे सॉ तो दैट हर्षित इज वी एन सॉ दैट ऑलराउंडर, कुलदीप इज एन ऑलराउंडर, सो सर द पॉइंट इज भाई ना इवन इवन हाँ, इस कुलदीप हिसाब से भाई अगर हर्षित की बात करो, फिर तो अपने पास 9 बैटर है, हर्षित भी बैटिंग करेगा। भाई सिराज के बुमराह बैट, चक्का भाई सिराज बुमराह का सिराज चक्का घुमाई दे। सिराज बुमराह आउट होता नहीं है। भाई बुमराह का टेस्ट में एक ओवर में हाईएस्ट स्कोर है, वो भी ब्रॉड के खिलाफ। मैं बुमराह नहीं है ना स्क्वाड में, बुमराह यही तो प्रॉब्लम है। बुमराह बेस्ट बेस्ट बॉलर है भाई, बेस्ट बैट्समैन है भाई। वो इंग्लैंड सीरीज था भाई, बुमराह और शमी ने भाई बॉलिंग तो करते ही है भाई, बैटिंग से तंग करके रखा हुआ था भाई इंग्लैंड को। दैट वाज यस। गोटेड सीरीज, दैट वाज गोटेड तो सीरीज ये स्वर्ण भाई। का 11 आई क्या विल होगा लीव फिर? दैट। भाई it exactly looks the same भाई। This is the Yeah. only option where we can change Prasidh and Harshit. Yes. Yes. I want Harshit to play, although I have a feeling that Harshit might not play. Prasidh and Harshit both might play, Just because Arshdeep is a left arm but option, I want him to play. I want him to play for a long time actually। भाई जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेला था, इवन देन आई वाज अ लिटिल अनश्योर कि भाई हार्दिक पांड्या का मिस थोड़ा सा लगेगा कि भाई ओडीआई में हार्दिक पांड्या का खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से।
तो भाई देखते हैं फिर. नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द मैच टू स्टार्ट. अभी से इफ वी से कि 9 9 घंटे। आवर्स फ्रॉम हियर, 9 आवर्स, 9 घंटे में मैच स्टार्ट हो ही जाएगा. प्लेइंग Yeah. 11 डिस्कस हो गया. रोहित कोहली वापस आ रहा है. मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ. इस सीरीज को लेके बहुत ज्यादा हाइप है बिकॉज ऑफ रोहित कोहली कमिंग बैक. रोहित एंड कोहली फैंस ना एक बहुत ज्यादा ट्रोल करते थे कि भाई क्या ही है धोनी की भाई अचानक से 4 मैच मतलब 4 बॉल खेलने के लिए आ जाता है, उसके लिए तुम लोग इतना हाइप करते हो. आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि वी धोनी फैंस क्यों इतना हाइप करते हो, वेट करते हैं. यू हैव वेटेड फॉर 8 months टू वॉच योर फेवरेट प्लेयर्स प्ले एंड व्हेन दे हैव कम इनटू प्ले यू आर हाइपिंग देम. ऑफ कोर्स चीजें सेम नहीं हो गए बिकॉज रोहित एंड कोहली बोथ आर टॉप ऑर्डर बैट्समैन. यू विल गेट टू सी मोर ऑफ देम. You will get to see them bat in every matches, which is not the scene with MS Dhoni. And of course, he's not helping by coming at 8 down, 9 down. That's a different Also, thing. Rohit and Kohli are not 44. Yeah, but he Dhoni is playing IPL at 44, so I don't think that's a issue. उसमें भी है भाई Yeah. कि तुम लोग बात करते थे कि भाई सीनियर प्लेयर होके एज होके जूनियर्स का जगह छोड़ नहीं रहे हो जूनियर के लिए धोनी को. ही इज ईटिंग अप ए प्लेस इन फ्रेंचाइजी क्रिकेट. एंड अगर उस लॉजिक को लगाना है, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर, बट अगर उस लॉजिक को लगाना है देन रोहित एंड कोहली आर ईटिंग अप प्लेसेस फॉर यंगस्टर्स इन इंटरनेशनल. बट ये बकवास दैट बात इज है। नॉट आई एम व्हाट नॉट आई वांट. सपोर्टिंग हिम। मैं Yeah. इसको नहीं जानता। मैं बोल नहीं ये रहा हूँ भाई. हमारा नहीं है. मैं कह रहा हूँ अगर ये अगर हमारा अगर नहीं. तुम उस लॉजिक लगाओगे, अगर तुम वो लॉजिक धोनी के लिए लगा रहे हो तो वो वो लॉजिक इस पे भी ये लगता है. ये भाई बात तुमने जो है लॉजिक लगाया वो बहुत गंदा था। अथू मेरा सारा मूड खराब हो गया। भाई, मेरा लॉजिक नहीं है भाई, मेरा लॉजिक नहीं है. अ, इट्स गुड बात दैट तो वी ये है आर कि तुम लोग watching, we will watch them play together, Yeah. and I would बट request इट विल बी BCCI to arrange more ODI matches too, because it Yes, is like please. भाई. fun format. ओडीआई वर्ल्ड Okay, कप से पहले, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले इफ वी आर नॉट मिस्टेकन 2021 मैचेस शायद हम लोग खेलेंगे. 2021 ओडीआई मैचेस okay, खेलेंगे. that's good for us. इज दैट गुड एनफ? पता नहीं है भाई, क्योंकि Let's उसमें से see. कुछ मैचेस बांग्लादेश होंगे, कुछ मैचेस अफगानिस्तान होंगे, ऐसे कुछ मैचेस रहेंगे. तो See, आई T20s भी तो है ना. So, लिमिटेड ओवर्स हाँ मैच तो खेल रहे हैं तो Okay, एटलीस्ट okay. कुछ तो हो गया. I will leave then. Okay. Oh, हाँ भाई, हम Even भी I have to go. हम भी चलेंगे. okay, bro. Thank you ठीक है भाई. guys. Bye bye. See you later. कल मैच के शब बाद बखैर. देखते हैं भाई, अगर पॉसिबल होता तो स्ट्रीम Okay, करेंगे bro. मैच के बाद. चलो, ठीक bye है, bye. चलो गुड नाइट Bye भाई. bye. चलो गुड नाइट, बाय. Good night. भाई एक स्पार्टन ओपी था भाई। थैंक यू बोल दो उसे भी।